Can you guys see this? Is Yes, sir. it shared with you? जी बाबा जाओ, कुछ कह रहे थे आप? स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी सर, आ रही है। ओके। यस सर। Now, I think this was enough about the theoretical part. Only I will add one thing, which is the finding the tangent involves a concept. Let's say that concept is gradient of the function is basically normal to that point. ठीक है, जब हम gradient find करते हैं ना किस two variable functions का, that represents the normal vector on that point. अगर उस gradient में हम point भी fix करें तो, so for example this is gradient. ये अगर कोई function given है f of x comma y z, then this is gradient at particular point. Now this is normal to surface, basically normal to surface at point. ठीक है, वो जो आपका point है उसी पर, तो so this is point. तो इस concept पर उसका depend करता है tangent plane find करना, and I skipping all these details and rushing back to this one. So this is formula. Yep. Okay. In short, this is formula. ठीक है. Okay, so tangent plane at point, कौन सी point x y, सॉरी x नॉट कमा y नॉट, इस पॉइंट पर, और आपने प्लेन को इस तरह एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखा है, सॉरी प्लेन को नहीं, सरफेस आपको जो गिवन है उसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखा है, या अगर गिवन ही एक्सप्लिसिट फॉर्म में इस फॉर्म में है तो ये उसका लिए फार्मूला है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी फाइंड tangent plane. Now just notice that this involves evaluation of function at particular point, at that point, x डेरिवेटिव एंड y डेरिवेटिव. ठीक है, बाकी उसमें x माइनस एक्स नॉट वाई माइनस वाई नॉट, ये x और y की मौजूदगी उसमें बताती है कि दिस इज प्लेन. ठीक है, जब x और y दो वेरिएबल्स होंगे तो आपको आइडिया हो दिस इज प्लेन, एंड आउटकम ऑफ दिस शुड बी अ लीनियर फंक्शन एंड x एंड y, क्योंकि प्लेन आपका लीनियर फंक्शन है. ठीक है, अगर उसमें पावर्स आ जाते हैं तो फिर वो लीनियर नहीं रहता, और बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स इट इज अपैरेंट के उसमें लीनियर ही आएगा, क्योंकि बाकी तो सारी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, ये भी न्यूमेरिक वैल्यू है, दिस इज आल्सो न्यूमेरिक वैल्यू, दिस इज न्यूमेरिक, तो ये x माइनस एक्स नॉट और y माइनस वाई नॉट बचेंगे. ओके, cutting this story short, let's start out this example. Find equation of the tangent plane to this curve. Now इसमें अभी पॉइंट नहीं बताया गया, जनरली कहा गया है कि टेंजेंट फाइंड करें, सो वी विल कीप द जनरल पॉइंट कोई भी x और y. ठीक है, बल्कि वेट लेट मी सी, ओ सॉरी पॉइंट ये है आपका, आई मिसिंग. ठीक है, ओके, सो -1 and 3 पर, ठीक है. So look at this formula. What we need, function value at this point, -1 and 3, and derivative of with respect to x, derivative with respect to y. So first of all, this is function log of 2x plus y. We evaluate at -1 comma 3. So log of 2x, x is -1, y is 3. So we get -2 plus 3 log of 1, which is equal to 0. So value of function is
0. नेक्स्ट डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू y, log of 2x plus y इसका डेरिवेटिव होगा 1 over 2x plus y एंड चेन रूल अप्लाई करेंगे और 2x का अगेन डेरिवेटिव, सो 2 here and with respect to y derivative 1 over 2x plus y and इस पूरे का with respect to y derivative करेंगे तो we will have 1 because x will be treated as a constant, so chain rule means, and evaluation of this at this point -1 comma 3, so x is equal to -1 here and y is equal to 3, so this will be -1 plus 3, so -2 plus 3, so this will be equal to 1, so 2 over 1 is 1 and 1 over similarly यहाँ पर भी +1 आएगा नीचे, so in the end we will have 1. all right, so ये तीन values 0, 2 and 1 we plug in over here, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 2 and यहाँ पर 1, so ये values put करें and simplify करने के बाद we will have this plane. ठीक है, now this is equation of plane which is tangent to this surface. ठीक है, and if you give me 1 minute again, maybe Desmos and so z is equal to log of 2x plus y. Log of 2x plus y. Now this is surface and this is plane. Z is equal to 2x plus y plus -1. So f of x comma y is equal to 2x plus y minus 1. Come on. Alright, I will make a video and then share with you guys. So ठीक है, so ये हमारा surface था and this was plane, tangent plane at point -1 comma 3. Okay, this is the story of linear approximation. So this plane basically approximates our given surface at this particular point -1 comma 3. उसके आसपास जो है वो सरफेस इस जैसा दिखेगा या इससे हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. ठीक है, so this is story over here, not that important for you guys. But in the next question, when we are being asked to find linear approximation of this surface, right, and then basically we have to find what? We have to find this tangent plane around this point. So इस point पर हम tangent बनाएंगे तो वो tangent उस surface की linear approximation होगी. अगर आप geometry से हटके भी अगर देखना चाहें या मतलब इसको सोचना चाहें, imagine करना चाहें, now this is a function of two variables, z is equal to x and y, और उसमें x की पावर से और y की पावर्स भी है. इट्स अ नॉन लीनियर फंक्शन. और ऊपर वाले एग्जांपल में दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन. ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर फंक्शन है, x की भी स्क्वायर है, y की भी स्क्वायर. तो टेंजेंट फाइंड करने का मकसद ये है कि वी आर इन लेट्स से वी वांट टू फाइंड z इज इक्वल टू फंक्शन L of x and y which should be linear. ठीक है, मतलब इस L और x का जो फंक्शन हो उसमें सिर्फ ax प्लस by प्लस c, x और y के पावर्स ना हो, लीनियर फंक्शन हो. ठीक है, तो ये एक प्लेन है जो इसको इस पॉइंट के आसपास, अगर ज्योमेट्री से हटके देखें तो नॉन लीनियर फंक्शन को हम
इससे, ठीक है, लीनियर फंक्शन से अप्रोक्सीमेट करते हैं। तो इसका प्रोसेस भी सेम होगा, वी विल हैव टू फाइंड टेंजेंट प्लेन। So first of all, this is function or value of function at point -4, 3, which is equal to 5, and first derivative with respect to x, with respect to y, ये उनकी values, we shall use these values, and this plane is called linear approximation of the surface. Do you think there is any question? You may write it and give me 1 minute. क्लास के लिए थोड़ा सा टाइम okay. Was it clear how we can find tangent plane to given surface? और ये जो लास्ट एग्जांपल है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ यूं है। ये हमारा सरफेस जो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, एंड ये इक्वेशन लीनियराइजेशन, दिस इज दिस प्लेन, ठीक है, और ये इस पॉइंट पे इसको टच कर रहा है -4, 3 पर, x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -3, ठीक है, okay. And then we have a next. So now look, here are a couple of more examples, and इसमें वही डिटेल्स हैं कि हम कैसे फाइंड करते हैं, एंड जो मैंने आपको आइडिया बताया था, जो कॉन्सेप्ट उसमें यूज हो रहा है वो बेसिकली ये यूज हो रहा है कि नॉर्मल पॉइंट हमें ग्रेडियंट देता है, एंड ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस एट दैट पॉइंट, और नॉर्मल का किसी भी वेक्टर जो प्लेन है ना उस पर कोई भी वेक्टर होगा तो उसके साथ उसका डेरिवेटिव 0, क्योंकि प्लेन वेक्टर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो इसको 0 रख के दिस इक्वेशन बेसिकली गिव्स अस इक्वेशन ऑफ द प्लेन. सो आई एम कटिंग दिस derivation just to keep it simple for you, and the examples. Okay, so this is example. Look, find equation of the tangent plane at this point to the ellipsoid. I think okay, now this is given in a implicit form, if you notice, मतलब इस फॉर्म में गिवन है आपको, ठीक है, तो इसके लिए जो मतलब है आपके पास जो फार्मूला है that is this one, ठीक है, no, not this one, but this one. So let me find the difference between these two. दूसरा आपका जो है, now this is when function is, ये रिकॉर्डेड होंगी और आपको मैं इसको शेयर भी कर देता हूँ, when function is in implicit form means this one, right? तो ये फार्मूला है, और अगर एक्सप्लिसिट फॉर्म में है इसका मतलब है अगर इस फॉर्म में है तो हमारे पास जो फार्मूला है दिस वन, ठीक है, लुक एट दिस, ये सेम है जो हमने यहाँ पर किया था फार्मूला,
इसमें क्या था फार्मूला, रिमेंबर दिस वन, z इज इक्वल टू, नाउ दिस थिंग इज z नॉट, जो फंक्शन की वैल्यू है x नॉट कॉमा y नॉट पर, दिस इज z नॉट बिकॉज z इज इक्वल टू फंक्शन। ठीक है, तो ये अगर इस तरफ लेके आए हम इसको तो z माइनस z, ओके, so let me write it exclusively. So z is equal to f of x naught comma y naught plus f prime of derivative with respect to x at this point, x minus x naught plus derivative with respect to y at this point, and then y minus y naught. ठीक है, z naught is equal to, we can use this also. तो अगर इसकी जगह पर हम z नॉट रखें तो formula is given on slide number 96 and this is 103, the same formula. ठीक है, okay, so ठीक है, this is saved. And now example back, notice that this function is in implicit form, इस फॉर्म में है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, मतलब तीनों के दिस वन, कौन सा फार्मूला होगा आपको, मैं दिस वन, तो तीनों डेरिवेटिव्स चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू z, एंड देन तीनों फैक्टर्स और डेरिवेटिव्स की हमने वैल्यू भी फाइंड करनी है, x नॉट, y नॉट और z नॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों के डेरिवेटिव, सो कमिंग बैक टू दिस एग्जांपल, ओके, ये पॉइंट भी आपको गिवन है। ठीक है, सो ये उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू z, और इस पॉइंट पर इनकी इवैल्यूएशन -1, 2 एंड दिस वन। नाउ प्लग इन दीज वैल्यूज, वी विल हैव दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इसको फर्दर सिंपलीफाई करके हम लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है, so this is equation of tangent line, the first part of the example. It's a very, I mean, simple one. And now next part in the example is find नॉर्मल लाइन एट पॉइंट। ठीक है, अब जो टेंजेंट प्लेन बनेगा, सपोज करें कि ये जहाँ सरफेस है उस पर ये टेंजेंट बना है। नाउ दिस पेन इज जस्ट नॉर्मल लाइन, जो नॉर्मल लाइन होती है जो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर हो, क्योंकि ये स्ट्रेट है तो इस पर एक ही लाइन होगी, वो 90 एंगल बनेगी या परपेंडिकुलर होगी। अगर यूं थोड़ी सी लाइन होगी या यूं होगी तो उनकी एंगल चेंज हो जाएगी। ठीक है, वी विल हैव ओनली अ सिंगल नॉर्मल लाइन, and equation of that normal line is वो यहाँ पर है, the normal line to surface at point P is the plane pass, sorry, is the line passing through point P perpendicular to the, ठीक है, thus the direction of the normal line is given by the gradient vector। तो इसको ऐसे जब हम लेंगे, ग्रेडियंट लेंगे, तो हमें उसका डायरेक्शन बताएगी, एंड और उस डायरेक्शन के बाद पैरामेट्रिक फॉर्म जो होगा नॉर्मल लाइन का, वो हम ऐसे लिख सकते हैं।
ठीक है. Now let me exclusively write it for you. And this is symmetric equations of normal line to surface at point x naught, y naught and z naught. ठीक है, तो ये उनकी इक्वेशंस हैं और एग्जांपल 8 में वी शैल सी कि हम यही इक्वेशंस यूज कर रहे हैं. ठीक है, एंड जो नीचे उसके डिनोमिनेटर्स में है, दीज आर बेसिकली डेरिवेटिव्स. ये आपका f of x है, f of y and f of z. तो ये वाले आपके हैं x naught, y naught and z naught. This is symmetric equation of the normal. So this was all about example number 8 and this is its graphical represent. So ये आपका ellipsoid था, ये tangent था और this red line is like normal. And surface ellipsoid and this is tangent plane. कौन सी पॉइंट पर है आप लोकेट कर सकते हैं. एंड दिस इज नॉर्मल लाइन. ठीक है, आई थिंक दिस एग्जांपल इज सेल्फ explained, well explained. And yeah, there is any question or because of recording everybody is just gone? No, sir. I am available. Good. Okay, then maybe another example in this slide, or we have more examples over here in okay, so this is solution manual solution from the Paul's notes, and this is plane. We have to find equation of tangent plane at this point. Now this is given in explicit form like this: z is equal to f of x comma y, and the formula is, उसका क्या formula है? Z is equal to f naught plus f of x naught y naught x minus x naught plus f of y x naught comma y naught multiplied by y minus y. ठीक है, okay, so why not something like this? So first of all f of x, then f of y, and then function की value is point पर. This is -7, उसके derivative की value x की और y की, then plugging into the formula, ये जो है plane का equation, basically equation of tangent plane, so we get this one. ठीक है, and next example, this is another surface. We have to find equation of tangent plane at this point. Similar process, first f derivative with respect to x and y. Derivative करना मेरा ख्याल है, I think you can do it because we have already done this. And फिर function की evaluation with respect to x and with respect to y evaluation, and then plugging into the value.
सिमिलरली एग्जांपल सेम, उसमें सेम प्रोसीजर है, आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, वैल्यूज फाइंड करने हैं डेरिवेटिव के और फंक्शन के, एंड यूज करने हैं फार्मूला में। सो ये एग्जांपल्स थे 3 सॉल्व कर लेंगे। सो आई एम अपलोडिंग these LMS पर आपके लिए अपलोड मैं कर रहा हूँ अभी से ही, ठीक है। और एंड जो नेक्स्ट अभी टॉपिक है हमारा आफ्टर this tangent planes and normal lines, that is, stop sharing and then teaching this filter. Maximum and minimum values. वैसे तो वो हमने किए हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज डिस्कस किए हैं शायद, है ना। एंड देन लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स, ये दो टॉपिक्स रहते हैं, देन we can move to integration after these two topics. Okay, can I give you some class test here, the guys who are online, and let me find some question for you. X square minus 3 and x. Okay. Minus 3xy plus 8y square plus 2x minus 4y. Can you read this? ये एक क्वेश्चन है, ये आपने अभी सॉल्व करके इसको मैं LMS पे रखता हूँ और वहां आपने टिल 12 अपलोड करना है, ठीक है। आप लोगों को पता है आप लोगों की जो अटेंडेंस है वो LMS एक्टिविटी की बेस पर मतलब होगी इन दी एंड। जो आप क्लास की अटेंडेंस है, अगर वो शॉर्ट हो गई तो यू में आई मीन सफर। तो ये आपकी क्लास एक्टिविटी है, अगर ड्यूरिंग क्लास ये आपने LMS पर अपलोड किया, इवन द गाइज हु आर नॉट ऑन द ऑनलाइन, सो उनके लिए भी है।
I hope they will get message very soon. ये आपने इसका टेंजेंट की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन फाइंड करके और सॉल्यूशन अपना स्नैप अपलोड करना है LMS। सर जो ऑनलाइन जैसा भी क्लास में नहीं है तो वो उनके लिए भी सेम टाइम है? You are here, right? आप यस सर, हम मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन हाँ बस ठीक है जो उनको नहीं है उनके लिए क्या टाइम होगा? 12 एक्चुअली क्लास टाइमिंग, क्लास टेस्ट है ना। ठीक है, मैंने मैसेज ग्रुप पे कर दिया। वेल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू बी online, I mean to stay online during the class, but and turn editing on. Class test. The same question is on LMS also. ठीक है, जब तक करें तब तक I will be back. Take more 10 minutes break. ठीक है।